सो हमने प्रीवियसली देखा था कि जो प्लूमूल होता है, जो सीड से जो अपर व्हाइट कलर का लेयर निकलता है, वो किसमें कन्वर्ट होता है, जिसे हम प्लूमूल कहते हैं, किसमें कन्वर्ट होता है, स्टेम में कन्वर्ट होता है। ओके, so stem is what I said, stem is acting like a transport agent which passes various minerals and nutrients to various parts of the plants. Okay, nutrients, minerals, ये सारे parts को transfer करता है। कौन? stem transfer करता है। उनको कहाँ से मिलता है? वो लोग किसमें से observe करते हैं? From where they get the nutrients and minerals? They get from the roots. Okay, वो लोग roots जो है वो absorb करते हैं soil से and they transfer to stem. stem जो है various parts of the plants को वो देता है। Okay, so here we'll see about the stem. Stem grows just above the soil. Okay, ये जो है ये रूट है एंड ये इतना जो है सॉइल में होता है एंड ये जो आप देख सकते हैं दिस वन, ओके, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टेम। दिस इज स्टेम। ओके, आप देख सकते हो स्टेम में ही लीव्स भी लगे हुए हैं। ओके, ओके, द लीव्स आर ग्रोइंग इन द स्टेम। ओके, एंड द वेरियस बर्ड फ्लावर्स आल्सो दे ग्रो हियर। ओके, फ्रूट्स फ्लावर्स जो भी वो स्टेम में लगते हैं। स्टेम जो है वो सॉइल के ठीक ऊपर होता है, इसे हम स्टेम कहते हैं। ठीक है ना? नाउ एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जो है वेरियस टाइप्स के होते हैं जिन्हें हम स्टेम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ओके, स्टेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम। कुछ स्टेम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ओके, सम ट्रीज दे ग्रो व्हाट, दे ग्रो टॉल, सम ग्रो वेरी स्मॉल। ओके, इन द लास्ट क्लास यू हैव लर्न ट्रीज, herbs, shrubs, yes or no? Okay, shrubs, trees or they grow very tall and the shrubs and herbs they grow very small. Okay, some have the soft, they have shrubs, they have what, soft stem they are having. Okay, for example coriander, it is a kind of shrub, it have a soft stem. ठीक है ना? Now so we'll see different kinds of stem. Okay, some, what I said, some are soft, some are hard. Okay, and something you might be knowing that normally जो stem हम क्या कहते हैं, ऊपर roots के ऊपर grow होता है। And one more thing about the roots, some roots they even grow outside the soil also. Okay, some root, जो कुछ plants होते हैं उनमें जो roots होते हैं ना वो stem के ऊपर भी grow होते हैं। Such kinds of roots are called what? Slit ends. Slit plants they are called. Slit type of roots they are called. I will show you. I have it in my home. I will show you after our completion of our lecture. Okay. Next we'll see what different. Sorry. Yes. Stem. We were discussing about the stem. Stem is acting like a transport agent. Okay. Again, I'm saying you. Stem is acting like a transport agent. It collects the minerals and nutrients from the roots and it passes to various parts of the plant. Next we will see about what? Leaf. Leaf, as we all know, they are green in color due to the presence of what? Chlorophyll. Green जो है वो leaf जो है वो कौन से कलर होते हैं? ग्रीन कलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। And we all, one more thing we know that the photosynthesis process through which the plants prepare their food. Plants जो है food prepare करते हैं। कौन सा process है? Photosynthesis process. And this photosynthesis process also take in the leaves. Okay. So what is present? Chloroplast is present in the leaf in which the plants prepare their food. And I think you remember मैंने क्या बोला था? Leaves जो होते हैं ना वो plants के kitchen होते हैं। Yes. सॉरी, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना वो प्लांट्स का किचन होता है। जैसे हम अपने किचन में फूड कुक करते हैं ना, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट सेल जो लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनमें जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। हियर आई हैव वेरियस काइंड्स ऑफ लीव्स फॉर यू, आई विल show you now. So before that I would like to say there are two types of leaves. In the last class, sixth standard, you have learned two types of leaves are there. First is what? Compound leaf. Then second is simple leaf. Simple or compound leaf. Simple leaf and compound leaf. Simple leaf and compound leaf. Here I will show you. This is a people leaf. Okay, this is an example for what? Simple leaf. And compound leaf, have you seen curry leaves which we use in our kitchens, in the which we put in the curries?
Okay, this is a simple leaf. Here you will learn about parts of the leaf also. हम इसके parts के बारे में पढ़ेंगे. जो compound leaves होते हैं, compound. Here a single midrib is there. Okay, single midrib is there and इनमें जो veins है, okay, you can see the veins clearly here. Okay, and compound leaf जो होते हैं ना, एक single sticks, एक single stalk होता है, single rib midrib होता है, जिनमें various जो leaves है वो attach होते हैं. Okay, various leaves are attached. For example, curry leaves and neem leaves भी आपने देखा होंगे. In single stick, many leaves are attached. So that is what compound leaf. Okay. So next we will learn about different parts of a leaf. So this is our leaf. This is what leaf blade. This is middle line. You can see this is what midrib. Midrib. And these other lines which are coming out from this rib, they are called as veins. Lamina. What apex? And near the apex, you can see some small leaf. They are called leaf veins. Veins. Okay, so these are the different parts of the leaf. This is what apex, and you can see some small leaves near this apex. This is what leaf base, and the middle line you can see through from which the veins are coming out. This is what midrib. We called it as midrib, and the small lines which are coming from this are called veins, and this leaf is called what? Leaf blade. This part, this part is called what? Leaf blade, and this is what? Lamina, and this is called what? Tip of the leaf. Okay. This is example for simple leaves. Okay, this is example for simple leaf. And compound leaf. This is what? These are compound leaf. Means from the single leaf, various leaves are attached to it. Okay, this is called what? Compound leaf. This is the compound leaf and this is the simple leaf. Different parts of the leaves. Okay, and in the further lecture you will see different types of leaf. Okay, there are, suppose you can see the arrangement of the veins here. You can see the clear arrangement of veins. This is called what? Midrib. This is what? These are the veins of the leaf. This is the apex part. Okay, which is attached to a stem. ये जो है वो stem में attach होता है. This is called tip. Okay, this is called lamina. Okay, and various other leaves also there. There are different types of leaves also. Okay, किसी के जो veins होते हैं वो rectangular form में arranged होते हैं. Leaves के different shapes के होते हैं. You can see this shape leaf. Can you see this leaf? Okay, different shapes के होते हैं. इनके जो veins है उनका arrangement भी अलग होता है. Network जैसा you can see connected है. एक में veins निकले हुए और एक में connected है. Okay, so network form of veins are there. Network form of veins are there. Okay, and here you can see यहाँ पे इसमें जो veins है वो देखिए आप लोग कैसे है. It is in a rectangular form. Okay, the veins are arranged in rectangular form. Here इसमें भी आप देख सकते हो veins clear अगर आपको दिख रहा है clear. Veins तो होते हैं single straight line में है, rectangular form में है.
ओके, स्ट्रेट लाइन में है ना. यस, यू ऑब्जर्व दिस वेन्स कैसे आप लोग देखो, सबके अलग अलग है. देखो दोनों में डिफरेंस देखो आप, दिख रहा है ना डिफरेंस. नाउ यू ऑब्जर्व दिस, इनके जो वेन्स है ना उनके देखो अरेंजमेंट देखो आप लोग. ओके, नेटवर्क फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, इनके वेन्स आर, इनके जो वेन्स से डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स आर देयर. यस, these veins are in the network form and the shape of the leaf is also different. Yes. So in the further lecture we will learn about what further flowers, hibiscus flower के बारे में पढ़ेंगे, उनका vertical bisection पढ़ेंगे. Okay. So today what we have learned, हमने आज क्या देखा, we have learned different types of roots. We have learned, okay, that is fibrous root and tap root. The roots के हमने parts पढ़े. Okay. We have learned functions of the stem. We have learned different types of leaf, different parts of the leaf we have seen in today's lecture. Okay. So today's lecture is complete. अभी आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे 1 by 1 पूछ सकते हो. ओके, या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हो.